हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। आमे माने आ पूर्व क्लास 11 रो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट रो फर्स्ट चैप्टर्स इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट कर सारचे दुटा पार्ट रे, जोट्रे अकाउंटिंग कौन, अकाउंटिंग कोटी यूज हुए, अकाउंटिंग रो एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग रो इन्फॉर्मेशंस, अकाउंटिंग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस ए विषय आमे जानि सारचे। आज आउ किछि आमे अकाउंटिंग विषय जानिबा, अकाउंटिंग रो सेकंड चैप्टर विषय जानिबा, जोटा कि हमर होछि बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स। तमने क्लास 11 अबिका नुआ आसछ, तेणु अकाउंटेंसी तम गोटे नुआ सब्जेक्ट, तेणु अकाउंटिंग थ्योरी बा अकाउंटिंग बेस तुमको स्ट्रॉन्ग करिया को पड़ियो, नले पूरा लाइफ रे तुमको प्रॉब्लम फेस करिया को पड़ियो। तो अबिका समय आछि तमे निजर बेस को स्ट्रॉन्ग करिया पे। तो चलନ୍ତୁ जानिबा आज सेकेंड चैप्टर, जोटा कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, टर्म बा टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। एवरी फील्ड में किसी ना किसी टर्म यूज हुए, ठीक से बोली बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन जिते सारा टर्म यूज हुए, आम तार विषय आज जानिबा। अबिका जानिया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बिजनेस फर्स्ट बेसिक टर्म होची बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन जोटा किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोटे मनी इन्वॉल्व थाए, कौन जानिबा? एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस विथ एनी अदर बिजनेस और कस्टमर इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। गुड्स एक्सचेंज है या कौन सी सर्विस प्रोवाइड कले कैश रो या क्रेडिट रो, गोटे बिजनेस रो आउटे बिजनेस या गोटे पर्सन रो आउटे पर्सन जोटा होता है, जोटा मनी होता है कैश और क्रेडिट, ताको आम कही बिजनेस ट्रांजैक्शंस। से गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, कारण बिजनेस मेन मोटिव होची प्रॉफिट, तो से प्रॉफिट आम के इट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ट्रांजैक्शन को डिवाइड कराई टू टाइप्स रे। फर्स्ट वन रिलेशनशिप विथ बिजनेस यूनिट, सेकंड मोड ऑफ सेटलमेंट। रिलेशन बिजनेस विथ बिजनेस ट्रांजैक्शन से इंटरनल भी पारे और एक्सटर्नल भी पारे। कौन इंटरनल ट्रांजैक्शंस? मानि चला डेप्रिसिएशंस ऑन फिक्स्ड एसेट्स। मो पाखे गोटे एसेट्स अच्छी, एसेट को आम यूटिलाइज करछे, तो एसेट वैल्यू रिड्यूस होची, तो ताको आम कौन करिया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन माने रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट बैड डेट। मानि चल मु कौन से कस्टमर को क्रेडिट रे गुड सेल करछि, बट किछि मास पर से मते पैसा देवर थिला, बट किछि मास पर से बैंकरप्ट होइछि, दिवालिया हो जाइछि, से पैसा दे परला नाही, तो ताकू मु कोन करबी? बैड डेट लिखि के क्लोज रे। तो ये सब थिला इंटरनल ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट जानिबा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कोन? सपोज आमे किछि गुड्स परचेज करिया, परचेज गुड्स, कैश पेड, परचेज गुड्स या सेल ऑफ गुड्स। ओके, ये सब होची एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। या रेंट पे करवा। तो नेक्स्ट आम जानिबा मोड ऑफ सेटलमेंट। मोड ऑफ सेटलमेंट कौन ना, ताको आम कैश ट्रांजैक्शन कहि परिबा या क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में कौन था ना कैश इन्वॉल्व था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व न था। सर कैश ट्रांजैक्शन कौन ना? गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश, सैलरी पेड, रेंट पेड, तो ये सब था कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कौन ना, जोटे कैश तुमरा इन्वॉल्व न थाए, लाइक तुमरा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये सब होची क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर आउटस्टैंडिंग सैलरीज कौन ना, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सेम एज यूजुअल आउटस्टैंडिंग वेजेस ड्यू बट एक्सपेंडिचर सरीछि किंतु आमे ताको पेड करी ना। तो ये सब होची ट्रांजैक्शंस। गोटे होची रिलेशन बिजनेस विथ, जोटा कि इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस, और होची मोड ऑफ सेटलमेंट, जोटा कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। सेकेंड टर्म होची प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर और ओनर आम कहीपर। कौन प्रोप्राइटर ना? द पर्सन हु टेक्स द इनिशिएटिव टू स्टार्ट द बिजनेस, इन्वेस्ट हिज मनी और मनी ओन एंड बियर द रिस्क ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर। जी बिजनेस रे पैसा इन्वेस्टमेंट करे और बिजनेस सब जाक रिस्क नहीं थाए, ताको आम कौन कही ना बिजनेस ओनर और प्रोप्राइटर कही। ये देख मनी एंड मनी ओन। मनी माने पैसा, मु बिजनेस रे पैसा इन्वेस्टमेंट कले या मु बिजनेस रे जदि किछि एसेट इन्वेस्टमेंट करछि, ताको आम मनी जार मनी वैल्यू थाए। तो अभी नेक्स्ट जानिबा थर्ड टर्म कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल ना? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। इट मे बी इन कैश और इन काइंड। मानि चलो बिजनेस ओनर या बिजनेस प्रोप्राइटर बिजनेस से किसी पैसा इन्वेस्टमेंट कला, सेटा होची तार कैपिटल, जोटा कि पूंजी कह जाए, मूलधन कह जाए। इट मे बी कैश और इन काइंड, सेटा कैश रही पारे और काइंड रही पारे। मानि चलो मोर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, मु बिजनेस 5 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट कली, तो बिजनेस कैपिटल होची 5 लाख, सेटा कैश।
मानि चल आम पार्टनरशिप बिजनेस करछे मु 5 लाख देली आ मोर सेकेंड पार्टनर से गोटे बिल्डिंग प्रोवाइड कला जार कॉस्ट होची 10 लाख तो सेटा होची काइंड तो बुझेला कैपिटल जोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस रे कियो भी इन्वेस्टमेंट करे ना ओनर आम बिजनेस जब प्रॉफिट हो तो आम कैपिटल इंक्रीज हुए और बिजनेस जब लॉस होता है आम कैपिटल रिड्यूस होता है तो अभी क्या नेक्स्ट जानिबा ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स कौन ना इट इज द अमाउंट और बेनिफिट withdrawn by the owner from the business for personal use it may be form of cash goods or assets बिजनेस रु जदि आम कि विड्र करिया पर्सनल यूज या डोमेस्टिक यूज जदि किसी यूज करछे ताको आम कौन कहते ड्रॉइंग्स कहते इट मे बी कैश आम कैश भी विड्र कर परिया या किसी स्टॉक विड्र कर परिया या किसी एसेट भी विड्र कर परिया मानि चल मोर गोटे फर्निचर दुकान अच्छी को दुकान ना फर्निचर दुकान मोर घरे गोटे सोफा सेट दरकार तो मु मो बिजनेस रु से फर्निचर घर को नहीं जीवी तो सीटा एसेट्स तो बिजनेस रु जदि किसी गुड्स स्टॉक या एसेट विड्र करा जाए ताको आम कौन कहते ड्रॉइंग्स अभी क्या नेक्स्ट टर्म जानिबा एसेट्स एसेट्स कौन ना दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन बाय द बिजनेस बिजनेस रे जोड़ाक प्रॉपर्टीज बिजनेस को चलाइबा जहाँ सब आम प्रॉपर्टीज यूज करूँ मानि चल लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्निचर मोटर कार ये सब हूँ बिजनेस प्रॉपर्टीज ओके इट हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू ये कौन ना बिजनेस रेवेन्यू जनरेट होता है नेक्स्ट आम जानिबा टाइप्स ऑफ एसेट्स एसेट को डिवाइड कराई 3 टाइप्स रे वन इज नॉन करेंट एसेट्स सेकेंड वन करेंट एसेट्स थर्ड वन इज फिक्टिशियस एसेट्स नॉन करेंट एसेट को आम फिक्स्ड एसेट भी कहीपर सर फिक्स्ड एसेट कौन इट रेफर्स टू दोज एसेट व्हिच आर परचेज बाय द एंटरप्राइज फॉर लॉन्ग टर्म यूज मानि चल आम गोटे लैंड किनिबा बिल्डिंग किनिबा ये सब आम फिक्स लॉन्ग टर्म बिजनेस लॉन्ग टर्म पे यूज होता है ताकू आम एगेन डिवाइड करूँ 2 टाइप्स रे कौन ना टेंजिबल फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स सर टेंजिबल कौन ना दोज एसेट व्हिच कैन बी सीन एंड टच आम देखी परिया टच कर परिया इस एसेट को आम कौन कहते ना टेंजिबल फिक्स एसेट एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी ये सब एसेट कौन आम देखिपारू और टच कर पारू लाइक फर्निचर फिक्चर्स ये सब एसेट्स नेक्स्ट सेकेंड वन कौन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल कौन ना दोज एसेट व्हिच कैन नॉट बी सीन एंड टच जो एसेट को आम देखिपारे टच कर पारे से एसेट को आम कौन कहता हूँ ना इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स सर इंटेंजिबल कौन लाइक गुडविल पेटेंट राइट कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल सर गुडविल कौन गुडविल जे रेपुटेशन बिजनेस नेम एंड फेम निज बिजनेस गुडविल जब तुम बन तो गुडविल कौन करे ना अट्राक्ट करे कस्टमर को निजर बिजनेस इनकम और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाई सेकेंड कौन पेटेंट राइट मानि चल तुम किसी गोटे नुआ जिन इनोवेट कल तार पेटेंट राइट तुम पाखे रहा दरकार सपोज मानि चल गोटे मेडिसिन तुम कौन लास्ट 20-30 वर्ष रिसर्च कर गोटे मेडिसिन को इन्वेंट कर तो तार पेटेंट राइट तुम पाखे रहा दरकार नेक्स्ट कॉपीराइट कौन राइटर या ऑथर एम जब किसी बुक पब्लिश करते से कौन कर निजर कॉपीराइट निज पाखे रख ना कहीं चोरी कर नहीं जाए तो कॉपीराइट निज पाखे थे आउ कहीं ट्रांसफर करेंगे ना ट्रेडमार्क कौन देख पट्टी कंपनी टीएम बोली लिखा है ट्रेडमार्क जोटा कि गोटे लोगो जोटा कि आइडेंटिफाई करे तो ये सब कौन थी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट जोटा कि आम देखिपारे कि टच करें बट आम टापे में पे करता नेक्स्ट सेकेंड कौन ना करेंट एसेट कौन ना करेंट एसेट्स आर इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर बट 12 मंथ्स भीतर जोटा कि इजिली कैश रे कन्वर्ट हो जाए ताको आम कौन कहते करेंट एसेट कर सर एग्जांपल कौन ना कैश इन हैंड कैश एट बैंक डेटर क्लोजिंग स्टॉक ये सब हूँ एग्जांपल कैश इन बिजनेस आम करछे बिजनेस हैंड जहाँ पैसा दैट इज कैश इन बैंक रे जब किसी पैसा अच्छे दैट इज कैश एट बैंक डेटर किए ना जो पर्सन को आम गुड्स क्रेडिट रे सेल कर आम डेटर कही क्लोजिंग स्टॉक्स एट द एंड ऑफ द ईयर किसी गुड्स अनसोल्ड थाए आम क्लोजिंग स्टॉक कहते ये सब हूँ करेंट एसेट जोटा कि इजिली कैश रे कन्वर्टेड हो जाए नेक्स्ट जानिबा फिक्टिशियस एसेट्स कौन इट हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू ये सब एसेट रे कौन थाए ना रियलाइजेबल वैल्यू थाए बट ये एसेट रे कौन सी रियलाइजेबल वैल्यू न थाए मान चलो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स सपोज आम किसी एडवर्टाइजमेंट पे करछे लाइक आम 50,000 एडवर्टाइजमेंट रुपीज खर्च कर 50,000 रुपीज स्पेंड कर एडवर्टाइजमेंट फॉर सेवरल इयर्स तो सेटा हूँ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स
नेक्स्ट अभी कहीपर एक्सपेंसेशन इश्यू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेशन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, इस ऑल एग्जांपल ऑफ फिक्टिटियस एसेट्स। तो अभी का बुझी आसला एसेट्स ना एसेट कौन ना बिजनेस प्रॉपर्टी जोटा कि रेवेन्यू जनरेट करता है ताको 3 टाइप्स रे डिवाइड कराई नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट एंड फिक्टिटियस एसेट्स। नेक्स्ट टर्म जानिबा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, बिजनेस आउटसाइड को जहाँ पे करे दैट इज लायबिलिटीज। लायबिलिटी पेएबल टू द प्रोप्राइटर इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी। यदि बिजनेस प्रोप्राइटर को किसी पेमेंट करे ताको कह जाए इंटरनल लायबिलिटी। सर बिजनेस कहीं प्रोप्राइटर को पे करियो जेता में बिजनेस स्टार्ट करते तो प्रोप्राइटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस ताको रिटर्न करियर तो सेटिफाई में ताको कहबा इंटरनल लायबिलिटी। सेकेंड वन लायबिलिटी पेएबल टू आउटसाइडर्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। जब बिजनेस आउटसाइड को किसी पैसा दिए ताको हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते। सर आउटसाइड कौन देवा मानी चलो जी आमको गुड्स सप्लाई कर क्रेडिट ताको हमें क्रेडिटर कहते ताको हमें पेमेंट देवा से बिजनेस आउटसाइडर्स मोर किसी एम्प्लॉय सैलरी ड्यू रही तो एक्सपेंसेस आउटसाइड ताको भी पेमेंट करिया। बैंक रु किसी लोन आने तो बैंक को पे करिया तो ये किसी लायबिलिटी जो आउटसाइड को पे करे ताको हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते। देन आम जानिए क्लासिफिकेशन लायबिलिटीज, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को 3 टाइप्स में डिवाइड कराई। फर्स्ट वन इज नॉन करेंट लायबिलिटीज, सेकंड करेंट लायबिलिटीज, थर्ड वन कंटीजेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज को हमें फिक्स लायबिलिटीज कही पारिया। जो लायबिलिटीज आमको सपोज मानी चलो बैंक रो हमें 10 लाख रुपीज लोन आने केते ना 10 लाख जो लायबिलिटीज आमको मोर देन 1 इयर्स लगी पे करिया को ताको हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बा फिक्स लायबिलिटीज कहता। बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, डिवेंचर्स ए सब आमर नॉन करेंट लायबिलिटीज रे जीवो। नेक्स्ट कौन ना करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज कौन ना दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेएबल विदिन 1 ईयर बा विदिन 12 मंथ्स। 12 मंथ्स भीतर जो लायबिलिटीज आम पे करवा ताको आम कौन कहता ना करेंट लायबिलिटीज कहता। लाइक तुम क्रेडिटर्स, लाइक बिल्स पेएबल, लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कौन ना करेंट लायबिलिटीज। सप्लायर जो गुड्स सप्लाई करता क्रेडिट ताको पेमेंट ताको हमें पेमेंट करवा से हूँ बिजनेस में क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कौन ना एक्सेस अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक रू किसी एक्सेस अमाउंट विड्रॉ करछे मानी चलो मो बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज अच्छी बट मु परमिशन दी 6 लाख पर्यंत आम बैंक रू विड्रॉ कर पारे तो जो एक्सेस 1 लाख आम विड्रॉ कले ताको आम बैंक ओवरड्राफ्ट कहता। नेक्स्ट आम जानिबा कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंटीजेंट लायबिलिटीज कौन ना इट इज अ लायबिलिटीज फ्यूचर्स इवेंट में डिसाइडेड इट इज रियली लायबिलिटी और नॉट। फ्यूचर आम जानिबा एटा लायबिलिटी कि नुहे। सर फ्यूचर कौन जानिए सपोज मानी चल आम फाइनेंशियल केस पेंडिंग अच्छी इन द कोर्ट ऑफ लॉ तो फ्यूचर से डिसीजन मो एगेन्स्ट गला तो मु पे करी जब मो फॉर गला मु पे करी ना तो फ्यूचर डिसीजन निया ये लायबिलिटी कि नुहे। जदि लायबिलिटी आम पे करियो जदि लायबिलिटी नुहे आम पे करवा ना। तो ये थिला ऑल अबाउट योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटीज कौन द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस आउटसाइड को जोटा पे करे ताको आम लायबिलिटीज कहता। तार टाइप्स होची नॉन करेंट लायबिलिटीज जोटा कि फिक्स लायबिलिटीज आमर कहली बैंक लोन या मॉर्गेज लोन इस या डिवेंचर्स ये सब हूँ एग्जांपल ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज कौन जोड़ा विदिन 12 मंथ्स भीतर पे करा जाए आ कंटीजेंट ना फ्यूचर डिसीजन बा फ्यूचर इवेंट जना पड़े से लायबिलिटी के नुहे। आई होप आपको भिडियोटी भल लगी आउ किसी वैल्यूएबल इनफॉरमेशन प्रोवाइड करिथिबो। जदि आपको भिडियोटी भल लगी तो लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और फ्रेंड्स मान सहित शेयर करंतु। आर नेक्स्ट वीडियो रे हमें आउरी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी विषय बहुत किसी जिनस जानिबा। थैंक यू।